moving on. Please stay very focused now, very focused. Every word said is very important now, right? There we go. Right, so I must make you a heading that we are learning ionic bond. And I told you that ionic bond is found between a metal and non-metal, where the metals lose electrons, non-metals gain electrons, they form positive ion, negative ion, they attract each other, and ionic bond is formed. And the compound produced is called as ionic compound. मैंने यहाँ पे कुछ examples आप देख रहे होंगे screen के ऊपर, right? So I'm telling you that कि lithium fluoride में भी ionic bond है, lithium metal, fluorine non-metal, right? So lithium is atomic number 3. Actually, its electronic configuration is 2 1. So as you can see, and fluorine is 9. It's 2 7. तो are you seeing that कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्लोरीन में, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो लिथियम गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन नेगेटिव वन चार्ज, दोनों आपस में अट्रैक्ट किए, आयोनिक बॉन्ड बना, आयोनिक कंपाउंड बन गया. सेम गोज विद MgO, राइट? सी दैट कि Mg is 12, it's 2 8 2, ऑक्सीजन is 8, it's 2 6. तो कैन यू नोटिस दैट कि Mg जो है वो अपने जो आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, राइट, वन दिस एंड वन दिस, राइट, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, चार्जेस लिख दिए आपने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो कर दिया. सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो है बाय द वे, इफ आई मेक इट क्लियर टू यू, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको तो क्लियर है, राइट. सो देयरफॉर Mg+2 and O-2, the ionic bond is formed and the compound produced is called as ionic compound. Is that so? So lithium fluoride and magnesium oxide, as you can see, electron transfer show kiya, aapne ions banaye, aapne charges likhe, and you score the marks. So you're seeing that the number of electrons lost are equal to number of electrons gained. Where the metal will lose electron, its name remains same. Where the non-metal will gain electron and its name changes to IDE. The two ions are produced. These two ions attract each other. This attractive force is called as ionic bond, and the compound produced is called as ionic compound. All right. Shall I move on, everyone? Sir, in the first diagram of lithium, why are there 4 electrons drawn? No, it's 3. Oh. वो ऐसा cross लगा हुआ है, cross है वो. Okay, thank you. Yeah, it's a cross. It's 3 crosses. Sir? जी बच्चा. Sir, and when chlorine oxygen like share an electron, we call it chlorine oxide. Why don't we call it chlorine oxygen? Like, why do we change oxygen to oxide and let chlorine remain the same? नहीं, वो तो आप बेसिकली असल में 2 नॉर्मेटल्स कंपेयर कर रहे हो ना. अभी तो मैं स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करूंगा. अभी तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ a compound produced between the metal and non-metal and how their names are being changed. जैसे I move on to the other things, of course, I'll tell you more about it. But अभी नहीं. Okay? Okay, sir. Okay, shall I move on, everyone? So this, okay? Yes, sir. There we go. Okay. We can see more. Let's see. So let's say, for example, if I ask you that show the bonding in calcium fluoride, right? यहाँ पे calcium is 20 and fluorine is 9. Please understand as well, ठीक है? रट्टा नहीं मारना इस चीज़ का. अब calcium 20 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो I think it's 2 8 2 and fluorine is 2 7. Now the interesting fact क्या है? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए.
लेकिन फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इजंट इट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब इलेक्ट्रॉन लॉस गेन तो इक्वल होता है, जितने मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने नॉर्मल गेन भी करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस गेन इक्वल होता है केमिस्ट्री के अंदर। व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस, रीडॉक्स की मेन एसेंस है, रीडॉक्स और इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो मैं आज बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन इक्वल होता है, राइट। अब उसने इलेक्ट्रॉन 2 लूज करने, वो एक गेन कर सकता है। तो फिर लेट्स से व्हाट इफ आई हैव 2 फ्लोरीन्स, राइट। So I think that the 2 electrons can be completed. That's why you say it's calcium fluoride, Ca and F2. जिसको आगे हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसको शायद आपने इस तरह पढ़ा हो कि कैल्शियम ग्रुप 2 में होता है तो इस पर चार्ज +2 होगा, फ्लोरीन ग्रुप 7 में होता है इस पर चार्ज -1 होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, तो आपने कहा जी CaF2 बन गया। ये तो रट्टा है, आई मीन ये पता होना चाहिए। इट्स एक्चुअली अ क्विक वे, इट्स अ ट्रिक। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो कैल्शियम है वो 2 फ्लोरीन के अगेंस्ट बैलेंस होगा विद इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। सो देयरफॉर लाइक इन द अर्लियर केस, मैंने अभी तो आपको प्रोसेस दिखाया। जब हम आपसे सिंपल सवाल पूछें कि शो द बॉन्डिंग, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़रूरत नहीं होती। ये आप ब्रेन में भी कर सकते हैं, रफ वर्क में कर सकते हैं। वी वांट दिस इवेंचुअल बॉन्डिंग, तो आई एम गोइंग स्ट्रेट अवे विद इवेंचुअल बॉन्डिंग, राइट। तो सी प्लीज एवरीवन, तो ये कैल्शियम है, ठीक है। तो इट्स 2 8 and 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +2, फ्लोरीन 2 हैं, तो फ्लोरीन तो इट्स 2 7। तो एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो चार्ज आ गया -1। लेट्स नॉट मेक इट मोनोटोनस, आप यहाँ पे सिंपल 2 भी लगा सकते हैं। इट मीन्स 2 फ्लोरीन्स rather than making 1 more fluorine again, it becomes monotonous। तो O level and IGC एग्जामिनर से दैट कि अगर नंबर ज़्यादा हो तो आप एक आइन बना के 2 लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना प्लीज़ कि आप यहाँ -2 लिख दें। नहीं भाई, ये एक का लिखा होता है, एक आइन का चार्ज है, इस तरह के 2 होंगे, राइट। सो इट्स कैल्शियम फ्लोराइड। So that's how ionic bond is formed between a metal and non-metal. Now, once ionic bond is formed, the compound produced called as ionic compound. Let's see the properties of ionic compounds. So guys, the first property is ionic compounds are solids at RTP. Why? Due to strong ionic bonds. Second, देखो जो ionic compounds हैं, basically they exist as crystal lattices, ठीक है। So ionic compounds exist as crystal lattices. What is actually a crystal lattice? So I can say it is a regular arrangement of species. Since यहाँ पे हम ionic compound की बात करें तो आइंस की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं प्लीज, crystal lattice ionic compound को कहते हैं, और ये crystal lattice it can be a covalent compound as well, ठीक। So the ionic compounds exist as crystal lattices. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? It means that the ions are regularly arranged in a fixed pattern. ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। So guys, are you seeing that कि आइंस किस तरह रेगुलर फैशन में अरेंज हुए हुए हैं? यहाँ पे की भी है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सच रेगुलर पैटर्न, ये क्रिस्टल लैटिस है, राइट। बस यहाँ पे आपको एक और बात का आइडिया भी हो रहा होगा, ये देखें जरा गौर कीजिएगा प्लीज़। अगर ये सोडियम आयन है तो इसके इधर भी क्लोराइड है, इसके इधर भी क्लोराइड है, इसके पीछे भी क्लोराइड होगा। आई मीन चलो मैंने यहाँ से काटा हुआ है तो इसके आगे भी क्लोराइड होगा।
यानी कि sodium ion is being attracted from 6 sides. So can I say that कि each sodium ion, can I say कि each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. ये हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते होते हैं वैसे, सेम स्ट्रक्चर है MgO का भी, सेम. अभी भी कह सकते हैं कि each magnesium ion is surrounded by 6 oxide ions and vice versa. देखिए ना, ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, राइट? ये फैक्ट है विद NaCl and MgO. इसको हम नॉर्मली कहते हैं केमिस्ट्री में इन हाई लेवल्स, इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर. इट्स नॉर्मली कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, जिसको आप आई थिंक सिंपली ऐसे बनाते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में. यू मेक अ क्यूब, right? And then you say that, let's say this red circle will be for sodium ion, and let's say this blue circle, let's say, is for chloride ion. तो फिर इस तरह होगा ये, ओहो सॉरी, तो इस तरह होगा फिर ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, फिर इवेंचुअली दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोराइड. इसको आप सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे बना लेते हैं. These lines show the regular arrangement. In reality में the structure it appears like this. Are you seeing? अब इस पॉइंट से one thing is evident, and that is, third point, we say ionic compounds are giant. अब यहाँ पे giant का मतलब क्या है? Many students have this misconception. They think giant, क्योंकि शायद आप लोग पढ़ते हो कि जो diamond, मैंने पढ़ाना कि diamond graphite giant molecules हैं, macromolecules हैं, sand macromolecule है. I must tell you, all ionic compounds are giant. अब giant का मतलब ये नहीं है कि humongous है, huge है, ये मतलब नहीं है giant के chemistry में. Giant means a continuous structure, unending structure. आप खुद ही उसको तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो चीज़ वही देगी. अब मेरे पास अगर लेट्स फॉर एग्जांपल ओवर में से मैंने इतना बड़ा पीस निकाला NaCl का, सॉल्ट का, अब उसमें क्या एक Na और एक Cl है? भाई जिलियंस ऑफ Na, जिलियंस ऑफ Cl हैं, वो आपस में अट्रैक्ट होके बैठे हुए हैं. ठीक है, इट कैन बी अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर. मैं अगर तोड़ता हूँ उसको तो छोटे से पार्टिकल को मैं NaCl ही कहता हूँ, क्या नहीं? क्योंकि इट्स अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर. सो जाइंट का मतलब केमिस्ट्री में इज एक्चुअली it's a continuous